Hello students and welcome back to my YouTube channel. This is Kashima Soni and today we are going to start a new topic in the series structure and bonding. Yes, we are going to start a new topic, that is applications of resonance effects. So far in this chapter we have discussed about inductive effects, electromeric effects and resonance effects. So if you have not watched the previous two videos that I have uploaded, please go through the links that I have mentioned in the description box and then switch to this part of the chapter. Only then you will be able to understand what exactly we are discussing. Right? So without wasting any more time, let's proceed to the next part of the chapter. Alright, so the very first application of resonance effect is low reactivity of vinyl and aryl halide. Basically, we are going to talk about this low reactivity. What is the reason behind the low reactivity of vinyl and aryl halide as per resonance effect? See, the reason is that it is due to plus R और plus M effect, जिसे आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट भी बोल सकते हैं. It is the reason, this is behind the low reactivity of vinyl and aryl halide. So what is happening? The lone pair of electron that is present on the halogen atom are delocalized over the entire pi system, right? And consequently, the vinyl chloride can be regarded as a resonance hybrid of these two structures and aryl halide can be regarded as the resonance hybrid of these structures, right? अब बात आती है कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट की वजह से कैसे आप बोल सकते हो कि विनाइल और एराइल हैलाइड की रिएक्टिविटी कम है. See, over here, first of all, try to understand the resonating structures of, your vinyl and aryl halide. See what is happening exactly. The lone pair of electrons present on the halide ions are getting shifted to this carbon-chlorine covalent bond, making a double bond over here. And similarly, on the same side, what is happening? This 5 electrons are shifted to this CH2, right? And it results into the resonating structure like this. Similarly, in the other case of your chlorobenzene, you can see that lone pair of electrons are shifted to this carbon-chlorine bond and it results into the double bond character like this. So, and now the carbon, so has to maintain its tetravalency, will be shifting these 5 electrons to this ortho position, resulting into structure like 4. So, same is happening and you can make some other resonating structures as well, which shows that your lone pair of electron that are present on your halogen atom are completely delocalized in the entire system, which is why you can see it results into the formation of your कार्बन क्लोरीन डबल बॉन्ड. अब ये डबल बॉन्ड बनने की वजह से क्या होता है? See, while making a double bond between your carbon and chlorine from the shifting of your lone pair of electron of chlorine, what is happening exactly is the bond strength is increasing. You know the bond strength of double bond is greater as compared to single bond. अब इसकी वजह से होगा क्या? The chlorine is not easily getting displaced now after the formation of double bond, which accounts for the low reactivity of vinyl and aryl halide. So this was the reason. ये था रीजन इसकी लो रिएक्टिविटी का कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से व्हाट इज हैपनिंग, द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड एक्वायर्स some double bond character and as a result the halogen gets firmly attached to carbon and hence cannot be easily displaced, accounting for the low reactivity of vinyl and aryl halide. So अब हम बात करेंगे second application की. Let me change the color of the pen. Okay. So now we are going to discuss about the high reactivity of allyl and benzyl halide. Previous application आपने देखी the low reactivity of your vinyl and aryl halide. अब हम बात करेंगे कि allyl और benzyl halide की reactivity ज़्यादा कैसे है as per resonance effect. So they are far more reactive. Your allyl and benzyl halide, you can write down along with me. Allyl and benzyl halide are far more reactive than your primary alkyl halide. Are far more reactive than primary alkyl halide towards nucleophilic substitution reaction. Now, why it is happening? This is due to the reason that both your allyl as well as benzyl halide, they are readily undergoing the ionization. And upon ionization, they are resulting into the formation of these resonance stabilized allyl as well as benzyl cation. You can see over here. तो आप देख सकते हो allyl bromide के केस में क्या हो रहा है. Your bromine now being electronegative in nature will be taking the electrons from this
covalent bond between CH2Br, and now it will, after taking up the electrons, the structure formed is something like this, right? Now, after taking bromine, your CH2 will acquire positive charge, which is now balanced or which will now be stabilized by taking electron from this pi bond, and which it will result into the formation of something like this. So these are the resonance stabilized allyl cation over here you can see, and similarly आप दूसरे केस में भी देख सकते हो, इसी तरह bromine being electronegative will take up the shared pair of electron towards itself, making your this CH2 electron deficient. Now what will happen to remove this electron deficiency? This CH2 will be taking up electron from this pi bond, resulting into the structure like this, and you will get your respective resonance stabilized benzyl cation as well. तो इसी वजह से आपके पास जितने स्टेबलाइज रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज allyl cation as well as benzyl cation, it results into the stability of your your allyl as well as benzyl halide, which ultimately accounts for the high reactivity of your allyl and benzyl halide. So I hope that is quite clear to you. Now comes the question that why the carbocations derived from your primary alkyl halides are not highly reactive. Because the answer is very simple, because they do not give you the highly reactive or highly stabilized resonance structure. आपके प्राइमरी अल्काइल हैलाइड आपको इस तरह के स्टेबल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं देता है, जैसे कि आपको अलाइल और बेंजाइल के केस में देखने को मिल रहे हैं, which is why you can say that they are quite reactive in nature. So this is the second application. Now let's just switch to the third application, that is acidity of carboxylic acid. Now what is happening? The acidic character is basically depending upon the release of proton in aqueous solution so as to form the carboxylate ion. देख सकते हो आप, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड भी आपको यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर दे सकता है, एंड इससे जो आपके कार्बोक्सिलेट आयन बनते हैं अपॉन रिलीजिंग ऑफ प्रोटोन, दे आर आल्सो वेरी वेल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. So as it is clearly mentioned that both carboxylic and carboxylate anion, they are stabilized by resonance. So now we will be seeing how and what are the factors behind the acidity of carboxylic acid. See, that is quite clear. The stable is the carboxylate anion, the more stable the acid is. Okay. So आप properly ये बोल सकते हो that stable is the carboxylate ion. Stable is the carboxylate ion. Stronger is the acid. Stronger is the acid. Right? So this is something you need to remember. Right? So proceeding to the next slide and the next application. Previous application was quite simple while we are talking about the acidity of carboxylic acid. Basically acidity depends upon the release of proton. कि upon ionization आपका कितनी easily furnish हो रहे हैं आपके proton ion in any of the aqueous solution, and it will result into the formation of carboxylate ion. So greater is the stabilization of your carboxylate ion, greater is the acidity. Okay. Proceeding further to the next application, that is the relative strength of acidic character of phenol and alcohol. Now, as per the previous application, it is quite relatable to the previous application that we have discussed, that is acidity of carboxylic acid. तो यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे आपकी एसिडिक कैरेक्टर को ऑफ योर अल्कोहल एंड फिनोल, कि इन दोनों में से एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट. So in the first of all, you can see that we are discussing first of all about phenol. क्या हो रहा है upon ionization? It is resulting into the loss of your proton, and it results into the formation of your phenoxide ion like this. And also your phenol and phenoxide ion, they are both stabilized by resonance. In case of phenoxide, we are going to see some of the canonical structures which do not involve. Over here I have written involve. No. Phenoxide ion do not involve the separation of positive and negative charges. And basically here what is depending upon the stability, that is the stability of phenoxide ion. The greater the stable of your phenoxide ion over phenol, greater is the stability of phenoxide ion over phenol, which is responsible for ionization and hence the acidic character of phenol. तो ये बात तो आपको क्लियर कर देती हूँ मैं अभी यहाँ पे, कि जो फिनोल है वो ज्यादा एसिडिक होगा आपका अल्कोहल से, क्योंकि आपको फिनोल्स के केस में रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं एंड अल्कोहल के केस में
नहीं देखने को मिलते हैं। लेट्स सी दोज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल, यहाँ पे आप देख सकते हो over here these are the resonating structure of your phenol and over here these are the resonating structure of your phenoxide। ठीक है, ये phenoxide के resonating structures हैं, ये phenol के resonating structures हैं। You can see आपका जो phenol है, what is happening over here, there is occurring charge separation। first of all आपको अगर कभी भी मान लो कि आपको दो कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसी के भी कंपेयर करने हैं, जैसे कि यहीं पे हम बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल फिनोल एंड फिनॉक्साइड के आपको कंपेयर करने हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो आप किस बेसिस पे करोगे? देयर आर थ्री मेन कॉजेज और यू कैन से देयर आर थ्री प्राइम फैक्टर्स टू सी फॉर विच रेजोनेटिंग कैरेक्टर इज क्वाइट स्टेबल एंड विच इज नॉट। अगर आपको देखना है कि कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होंगे एज कम्पेयर टू द अदर वन प्रेजेंट, उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं और उनमें से फर्स्ट फैक्टर ये है कि आप पहले तो चेक करो कि किसके सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। अगर आपके फॉर एग्जांपल मान लो एक के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 6 बने हैं, दूसरे के 4 बने हैं, तो जिसके 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने हैं वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब इस केस में आप बोलो मैम कि दोनों के दोनों केस में 5 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने, तो बचा आई सेड देयर इज नॉट ओनली वन फैक्टर, देयर आर थ्री फैक्टर। तो एक फैक्टर तो हो गया साइड पे कि चलो उसके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते फिनोल और फिनॉक्साइड के बेसिस पे फिनोल और फिनॉक्साइड को, राइट। सेकेंड फैक्टर क्या था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को डिफर करने के लिए? दैट वाज द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। देखो अब डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अकरिंग इन बोथ ऑफ द केसेस। पूरे के पूरे जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरे के पूरे एंटायर सिस्टम में दोनों ही केसेस में डीलोकलाइज हो रहे हैं। यू कैन सी ऑल दीज resonating structures and that is why I am requesting you, if in case you have not seen the video related to resonance, I request you to please check the link present in the description box। तभी आपको ये चीजें समझ आएंगी कि यहाँ पे क्या खिचड़ी पक रही है, राइट, अदरवाइज आपको नहीं समझ आएगा। तो जी हाँ, I said that your second factor is the delocalization of charges which is again happening in both of the cases। तो सेकेंड फैक्टर के बेसिस पे भी हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। अब आता है थर्ड फैक्टर, दैट इज चार्ज डिफरेंशिएशन। देखो चार्ज कौन से आपकी चार्ज सेपरेशन जो है वो किस केस में देखने को मिल रही है? दैट इज द केस ऑफ फिनोल। बच्चा जिस केस में आपको चार्ज सेपरेशन देखने को मिलेगी दैट गिव्स यू लीस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो चार्ज सेपरेशन फिनोल में देखने को मिल रही है, मतलब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनोल के कंपैरिजन में कम स्टेबल होंगे। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे रेजोनेटिंग structure of phenoxide ion is greater than that of resonating structure of phenol। और रीजन क्या है इसका? ड्यू टू द चार्ज सेपरेशन अकरिंग इन द केस ऑफ फिनोल। ठीक है, जहां चार्ज सेपरेशन होगी उसके स्ट्रक्चर कम स्टेबल होंगे, राइट। तो ये भी आपको समझ आ गया फिनॉक्साइड की स्टेबिलिटी। और मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि अगर फिनॉक्साइड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो उतना ही जो होगा आपका एसिडिक कैरेक्टर फिनोल का ज्यादा होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। दिस इज द रीजन बिहाइंड द ग्रेटर एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल। तो एज आई टोल्ड यू दैट इन केस ऑफ एल्कोहल आपके पास अगर आप एल्कोहल को कंपेयर करोगे, लेट मी गेट बैक टू द प्रीवियस स्लाइड, या तो अगर आप एल्कोहल को कंपेयर करोगे उसके एल्कोक्साइड आयन से, नाउ व्हाट इज एल्कोक्साइड आयन व्हिच इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिलीजिंग ऑफ प्रोटॉन इन एन एक्वा सॉल्यूशन। तो अगर आप एल्कोहल को कंपेयर करोगे एल्कोक्साइड से, एल्कोहल इज स्टिल स्टेबल बट एल्कोक्साइड इज लीस्ट स्टेबल बिकॉज इसके कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्लियर है? तो ये रीजन है आपका जो एल्कोक्साइड आयन है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मल नेगेटिव चार्ज, यू कैन सी ओवर हियर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मल नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन has greater energy than your alcohol molecule। और इसीलिए जो आपका अल्कोहल है इसकी नेग्लिजिबल टेंडेंसी है टू फॉर्म लेस स्टेबल एल्कोक्साइड आयन। अगर ये प्रोटॉन को लूज भी करेगा तो एक लेस स्टेबल स्ट्रक्चर दे रहा है और वो फर्दर आपके पास रेजोनेंस स्टेबलाइज हो ही नहीं सकता, विच इज वाई आप कह सकते हो कि एल्कोहल की स्टेबिलिटी और एल्कोहल की जो एसिडिक कैरेक्टर है वो लेसर है एज कम्पेयर टू फिनोल। आई होप दैट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। Now talking about the next and quite important application of resonance effect, जहां से आपको रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं। बच्चा आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन था आपको ऐसे पूछा जा सकता है दैट कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल एंड एल्कोहल। तो आपको सब कुछ एक्सप्लेन करना है, राइट फ्रॉम इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स टू एवरीथिंग, दैट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ योर फिनोल। द रीजन इज दैट greater stability of its phenoxide ion over phenol, which is further responsible for ionization and hence account for the greater acidic character of phenol। ठीक है,
तो आप ये अपनी बुक से भी पढ़ सकते हो, वट एवर बुक यू आर फॉलोइंग, बी इट प्रदीप, बी इट मॉडर्न, वट एवर इट इज, आप वहां से भी पढ़ सकते हो. इट इज गिवन इन, इट इज मेंशन इन योर BSc फर्स्ट टेक्स्ट बुक. सो या, proceeding to the next application, that is your comparison of relative basic strength of ethylamine and aniline. तो आपको straight question ऐसे पूछा जा सकता है that compare the relative basic strength of your ethylamine and aniline. So आप देख सकते हो, this is the structure of your ethylamine and these are the resonating structures of your aniline. So in case of ethylamine, you can see that there is occurring plus I effect, that is electron donating effect due to this alkyl C2H5 present over here. क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑन योर नाइट्रोजन एटम. अब नाइट्रोजन के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, मतलब इसके पास और इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी होगी, राइट. तो ये और बेसिक बनेगा, आपके पास इसकी बेसिसिटी और इंक्रीज होती जाएगी जितने ज्यादा आप इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते रहोगे. ठीक है, सो दैट इज वन थिंग आपका, इसलिए इथाइलामीन का जो आपका बेसिक कैरेक्टर है वो ज्यादा है. While in case of your aniline, you can see that the lone pair of electrons, let me show you by changing the color, the lone pair of electrons that are present on your nitrogen, they are delocalized over the entire benzene ring system, that you can clearly see, and which shows that it is showing the plus R effect, right. So due to plus R effect, what is happening, the इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन योर नाइट्रोजन इज डिक्रीजिंग. वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को तो वो पूरे के पूरे सिस्टम में इसके डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो वो तो अवेलेबल ही नहीं होंगे फॉर डोनेशन. एंड इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन, दैट अकाउंट्स फॉर द लीस्ट स्टेबिलिटी ऑफ एनिलीन. तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसका, so now let's just discuss about the effect on dipole moment, and this is the last application of your resonance effect. So what is happening that first of all, let me tell you how you will be representing the dipole moment. Dipole moment is represented by mu, and the formula is charge. It is the product of charge into density. Okay, sorry, charge into distance, not density. Density is not, it is, d is your distance. It is charge into distance, right. This is your dipole moment. This is your charge between any two particle, or any two electrons, distance between those two electrons. So this is the distance, right. So what is happening, that the overall dipole moment of a molecule, it is actually the vector sum of dipole moments of all the individual polar bonds present in the molecule. For example, if you have to take up the dipole moment of complete CH4, so it is going to be the dipole moment of these, all of these polar bonds. Understood, right. So present in the molecule. Now I've just given the example. We'll discuss all these in detail. And what is happening exactly, that resonance either it can increase or decrease the magnitude of overall dipole moment depending upon the nature of polar bond. कि आपके पास पोलर बॉन्ड किस नेचर का है. जैसे मान लो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डेफिनेटली इट इज, मानने की बात क्या है, क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑल द हैलाइड आयंस आर इलेक्ट्रोनेगेटिव. So being electronegative, it will attract the shared pair of electron towards itself, and it will result into the structure like this, right. So यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो आपकी डायरेक्शन है डायपोल मोमेंट की, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन, इज समथिंग लाइक दिस, राइट. एंड ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑफ क्लोरीन क्या होगा, अगर प्लस आर इफेक्ट शो करेगा वो तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी कि इस तरह से, ठीक है, like this. Overhead it is showing the plus R effect, overhead it is showing the, in case of this it is showing the minus I effect, right. See, by taking an example we'll be able to understand it better. Let me change the slide. For example, let's just say that the dipole moment of your ethyl chloride, that is this only, ethyl chloride, is much higher than that of vinyl chloride. Write it down. Dipole moment of ethyl chloride is higher than that of vinyl chloride. Why it is happening so? Because in case of vinyl chloride क्या हो रहा है, the inductive effect and resonance effect is operating in opposite direction, right, and thereby it is increasing the dipole moment. So let me repeat it again for you. In case of vinyl chloride, what is happening, the inductive effect and resonance effect of chlorine, it is operating in the opposite direction, that you can see over here, right, and thereby it will be decreasing the dipole moment as compared to that of ethyl chloride, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन आपका सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है, that is minus I effect. This is your ethyl chloride, this is your vinyl chloride. Okay, तो यहाँ पे समझ आ गया आपको क्या बोलने की कोशिश की है, कि आपका जो रेजोनेंस इफेक्ट है
हाँ, जो आपका प्लस आर इफेक्ट है और जो माइनस आर इफेक्ट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑपरेट होने की वजह से जो आपका डायपोल मोमेंट है वो डिक्रीज हो रहा है। और वहीं अगर हम बात करेंगे इथाइल क्लोराइड की, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में आपका इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है, जिसकी वजह से डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन एक ही रह रही है, एंड इट हैज सम greater dipole moment as compared to vinyl chloride. Understood? So that is one answer about it. So ये तो होगी एक बात। अब चलते हैं आगे। Okay. So this is about another example of the dipole moment related application. So you can say, for example, if the question is asked that why the dipole moment of para-nitroaniline is greater than that of nitrobenzene. So the answer lies in the fact that आपके para-nitroaniline में this is the case. जो माइनस आई इफेक्ट है नाइट्रो ग्रुप का एंड प्लस आई इफेक्ट, दे आर री इनफोर्सिंग ईच अदर। देख पा रहे हो आप, री इनफोर्स कर रहे हैं एक दूसरे को, विच इज वाई आपका जो डायपोल मूवमेंट होगा यहाँ पे वो इंक्रीज होगा इन केस ऑफ पैरानाइट्रोफिनोल एज पैरानाइट्रोएनिलीन, नॉट फिनोल, पैरानाइट्रोएनिलीन एज कम्पेयर टू नाइट्रोबेंजीन। अंडरस्टैंडिंग? से रीइंफोर्स करने का मतलब क्या है इनके कहने का, कि वो आपका जो प्लस आई जो माइनस आई इफेक्ट है और प्लस आर इफेक्ट है, ये दोनों के दोनों ही एक ही डायरेक्शन में ऑपरेट कर रहे हैं, वो एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रहे हैं। रीइंफोर्स करने की वजह से क्या होगा, डायपोल मोमेंट करेगा इंक्रीज। अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑपरेट हो रहे होते तो उनका डायपोल मोमेंट करता डिक्रीज। तो ये केस नहीं है, यहाँ पे दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं आपके, ऑपरेट कर रहे हैं, so which is why they are reinforcing each other, and it results into the increasing of dipole moment in case of your paranitroaniline as compared to nitrobenzene. So this is another reasoning question that you should be prepared for all the time. So I would like to end the video over here, and we have discussed about the applications of resonance effect. We have discussed total of 7 applications, which include the low reactivity of your aryl and vinyl halide. Then we talked about the high reactivity of allyl and benzyl halide. After that, we have discussed about acidity of carboxylic acid. We compared about the acidic character of phenols, alcohols, the comparison of basic strength of ethylamine and your aniline. Then in the last we have discussed about the dipole moment effects and basic strength of ethylamine and acetamide. So in case any of these has been skipped or you have not mentioned, you can mention if something has been skipped. For example, I guess I have not discussed about the comparison of basic strength of ethylamine and acetamide. So let's just review this particular topic, a homework. So you have to compare the basic strength of ethylamine and acetamide. तो ये आपका होमवर्क है, मुझे आप बताएंगे कि इन दोनों में से किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कम्पेयर टू द अनदर वन, और क्या रीजन है इसके पीछे। प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई नीड टू सी दैट हाउ मेनी ऑफ यू आर actually studying seriously. Okay, and if you are watching, if 50 students, no matter if 50 students are watching the video, I need the answers of those 50 students. So yeah, that's all about it, and thank you so much. Keep supporting. If you like the content, press the bell icon for latest updates and subscribe, share, like, comment. Thank you.